हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज का जो एपिसोड है वो भी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन हर बार मैं मंडे को 6 बजे आपके पास एक टॉपिक लेके उसके ऊपर बात करता हूँ, बट इस बार मंडे 6 बजे हम आपको दिखा रहे हैं वर्कआउट। ये भी इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली, लेकिन ये बोल रहे नहीं है, ये करके दिखा रहे। तो आज हम करने वाले चेस्ट वर्कआउट। जो मेरा फिलहाल में चेस्ट वर्कआउट चल रहा है वो मैं आपको पूरा वर्कआउट दिखाऊंगा, और उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे प्रॉमिस किया था कि 1 मार्च को कुछ दिखाऊंगा, तो 1 मार्च को मैं आपकी, आज 1 मार्च है और करंट कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। 2 बने, 4 बने, 6 बजे, 6 बने, 6 बजे, यानी इतना याद हो गया ना मुझे 6 बजे की 6 बजे हो जाते। तो 2 एब्स बने, 4 एब्स बने, 6 बने, 8 बने, जितने भी बने वो आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है मेरा चैनल, और नहीं किया है तो जाते जाते कर लेना। एंजॉय द वर्कआउट। आई होप मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा। In the middle of the streets, they'll say everything they thought about you. You gotta make it a believer and watch me work. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. I'm coming for the top, this is a mutiny. Shit, I want percentage, yeah. Put you in your mind like fucking Dennis, yeah. You never had a chance like an abortion. Broken, you don't wanna play with me to forfeit. Shit, took it to a place that never thought he could. Now the lone wolf is howling up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. I'm a fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. I'm coming for the top, this is a mutiny. Don't know what to do with me. सो आई होप आप लोगों को, ये देखो ये होता है बॉडी बनाने के बाद का तकलीफ। तो आई होप आप लोगों को मेरी कंडीशन ठीक ठाक ही लगी होगी। जस्ट टू टेल यू कि ये फाइनल कंडीशन नहीं है। आई एम स्टिल वर्किंग, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। फ्यू वीक्स आउट, बता नहीं सकता किस लिए, लेकिन डेफिनेटली जिस लिए भी है आप लोग बहुत खुश होंगे मुझे वहाँ देख के, बिकॉज मुझे पता है कि समथिंग बिग इज़ कमिंग। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी कंडीशन कैसी लगी और मेरा वीडियो कैसा लगा। मोस्टली आपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखा होगा हर मंडे को, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक वर्कआउट वीडियो डाल देते। तो आप मुझे बताइए कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा पसंद आती है या वर्कआउट वीडियो, या दोनों। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे लिए आसानी रहेगी नई वीडियोज़ डालने के लिए। एंड पानी पीते रहो, बिकॉज समर इज़ हियर। अगर आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करो। मिलते हैं अगले मंडे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद।